So they have metameric segmentation, that is both external and internal segmentation. Both external and internal segmentation. नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेस्ट, नहीं नेक्स्ट आ जाइए बॉडी वॉल. नेक्स्ट इज बॉडी वॉल. आउटर थिन क्यूटिकल. बॉडी वॉल क्या है? आउटर थिन क्यूटिकल. उसके बाद सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. And then innermost smooth muscles. Smooth muscles which helps in locomotion. Which helps in locomotion. Next आ जाता है बेटा. They have setae which are pin-like and helps in attachment with soil. पैरापोडिया. Lateral appendages. Helps in swimming. एग्जाम्पल नीरिस है. हाँ जी बेटा, पेरेंट्स आ गया है, जाओ फिर. हेल्प्स इन स्विमिंग. ठीक है. और बेटा यहाँ पे एक चीज देख लो. एग्जाम्पल मैंने बताया है नीरिस. ड्यूरिंग, ये बेटा ये सुन जा. ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ध्यान से देखो. ड्यूरिंग ब्रीडिंग नीरिस हैज ए स्टेज जिसको हम कहते हैं हेट्रोनीरिस. हेट्रोनीरिस इज रिप्रोडक्टिव नीरिस. इसमें क्या है? ये नीरिस है लेटस से. ये लेटरल है, बट पोस्टीरियर हाफ में बेटा जो ये पैरापोडिया है ये नीचे को बेंड कर जाती है. ठीक है. हेट्रोनीरिस में 2 टाइप ऑफ पैरापोडिया. इसमें एंटीरियर हाफ में पैरापोडिया स्ट्रेट और पोस्टीरियर हाफ में बेंट पैरापोडिया. इसको कहते हैं हेट्रोनीरिस, दैट इज रिप्रोडक्टिव नीरिस. ठीक है. अब जाओ बेटा. ठीक है जी. तो पैरापोडिया किसमें है? सिर्फ नीरिस में है. और नीरिस में भी मैंने बता दिया रिप्रोडक्टिव नीरिस में कैसे है.
नेक्स्ट आ जाती है। हाँ जी बेटा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने फास्ट स्विमिंग करनी होती है ना, तो इसलिए हेट्रोनीरिस में ये पैरापोडिया की ऐसी शेप हो जाती है, विच हेल्प्स इन फास्ट स्विमिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिलोम। सो दे हैव ट्रू शाइजोसिलोम। मैंने आपको बताया शाइजोसिलोम क्या होता है। They have true schizophyllum. Next है respiration. They perform cutaneous respiration. They perform cutaneous respiration, that is respiration by skin. ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। They have closed circulatory system. They have closed circulatory system. Closed का मतलब आपको पता है, that is blood flows in blood vessels, capillaries. That is blood flows in capillaries. Second है, these are the first organisms to have blood vascular system. BVS, first organisms to have blood vascular system. नेक्स्ट है ब्लड इज रेड इन कलर। ये स्टार डाल के पॉइंट लिख देंगे। ब्लड रेड इन कलर ड्यू टू presence of hemoglobin. RBC is absent, but hemoglobin is presented. But hemoglobin is present in blood plasma. ब्लड जो है रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे है? इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सक्रीशन। जो एक्वेटिक फॉर्म्स है दे आर मोनोटेलिक। जो
टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, दे आर यूरियोटेलिक। अर्थवॉर्म जो है एक्सक्रीट बोथ अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मेटानेफ्रीडिया, या सिंपल हम इनको नेफ्रीडिया भी कहते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन excretion as well as osmoregulation। दोनों helps in excretion as well as osmoregulation। next है nervous system। next is nervous system। they have paired ganglia। they have paired ganglia which are connected by lateral nerves। paired ganglia which are connected by lateral nerves, and the ganglia are fused with each other to form double ventral nerve cord। ganglia are fused with each other to form double ventral nerve cord। next है they have photoreceptors as eyes, touch receptors and taste receptors। they have photoreceptors, touch receptors and taste receptors। next है they may be unisexual। they may be unisexual such as nereis, or they may be bisexual such as earthworm and leech। fertilization, फर्स्ट है एक्सटर्नल इन नीरिस, नो क्लाइटेलम। क्लाइटेलम मीन्स ootheca। जब पानी में फर्टिलाइजेशन है तो ootheca में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, ootheca बनता ही नहीं है। उसके बाद इंटरनल इन क्लाइटेलम in earthworm and leech।
in earthworm and in leech. In earthworm, there is permanent clitellum, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था. But in leech, clitellum is formed only during breeding season. क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है? मैं अभी बताती हूँ. थोड़ा सा इसको फोकस कर लो. क्लाइटेलम जैसे अर्थवर्म में है, formed by fusion of 14, 15 and 16 segments and is surrounded by a glandular tissue. ठीक है, this is a glandular tissue. It secretes case around 14, 15 and 16th segments of earth. अब ये देखो बेटा कि लेट अस से ये अर्थवर्म है. एक मिनट, दिस इज द अर्थवर्म. ये इसके बाहर एक यहाँ पे एक केस आ गया. इसके बाहर एक केस सिक्रीट हो गया. ये है उओथिका. ठीक है, ये उओथिका है. इसके अंदर ही एग्स आ गए, स्पर्म्स आ गए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई. उसके बाद अर्थवर्म बाहर आ जाता है, उओथिका रह जाता है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स है, और वहां से छोटे छोटे अर्थवर्म निकलते हैं और फिर इसके बाहर चले जाते हैं. कैन यू इमेजिन? ठीक है, इसके अर्थवर्म के अराउंड एक ऐसे करके क्या सिक्रीट हो गया, एक केस सिक्रीट हो गया. जैसे टोकरी सी होती है ना, ऐसा एक केस बन गया जिसको हमने कहा उओथिका. एग्स भी यहाँ से रिलीज हुए, स्पर्म्स भी यहाँ से रिलीज हुए और यहाँ पे आ गए. ठीक है, और अर्थवर्म धीरे 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 बाहर आ गया और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई. यू गेट मी? ठीक है, तो इस तरह से ये है ओथिका. तो अर्थवर्म में परमानेंट होता है, जबकि इसमें लीच में इट इज सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मोस्टली. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मोस्टली एक्सेप्ट इन निरिस. Except in niris where development is indirect. Where development is indirect and includes trochophore larva and includes, यहाँ लिख देती हूँ, trochophore larva. PHORE. ठीक है जी बेटा, यहाँ पे मैंने आपको नीरिस का बता दिया, कुछ फीचर्स लिख लीजिए नीरिस के बारे में.
nearest is the only annelid having open circulatory system. Having open, बाकी सब में closed है, nearest में open है. क्या दीजिए? Open circulatory system. It is aquatic. Fertilization external in water. Has trophophore larva. ये आपने लिख लिया. अर्थवर्म की डिटेल हमने करनी है. हिरुडिनेरिया के बारे में लिख लो. हिरुडिनेरिया हिरुडिनेरिया में लिख लो. इट्स सलाइवा सिक्रीट्स ब्लड एंटीकोएगुलेंट its saliva secretes blood anticoagulant hirudin which prevents clotting of blood, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब वो ब्लड सक करता है तो वो क्लॉट ना हो, तो इसलिए मतलब सक करता रहता है. नहीं तो क्या होगा, जैसे ही वुंड थोड़ा ओपन होगा तो वुंड में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी. पर जहां से उसने सक करना है वहां पे उसने हिरुडिन छोड़ देना है ताकि ब्लड आराम से बाहर आता रहे, क्लॉटिंग ना हो उस ब्लड की. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट स्पेशल थिंग अबाउट हिरुडिनेरिया या लीच. सो नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब फीट. आर्थ्रोपोडा एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट. एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. Largest phylum of kingdom Animalia. And among Arthropoda, class Insecta is the largest. On Earth, 2/3 of all named animals, जिनका हमें पता चल गया है, on Earth 2/3 of named animals are arthropods. They are found everywhere. कहीं भी कोई सा भी हैबिटेट हो. नेक्स्ट है, they are triploblastic, bilateral symmetry, organ system level of organization, tube within tube body plan, externally segmented,
and schizosylomate organisms, schizosylomate animals. Next है, their exoskeleton is formed of resistant cuticle. Their exoskeleton is formed of resistant cuticle followed by epidermis inside, followed by epidermis inside, and then muscles. ब्रैकेट में लिख लो इनर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर मस्कुलर लेयर, और फिर स्टार डाल के पॉइंट, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव स्ट्राइएटेड मसल्स, इससे पहले थे स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. The blood flows in open cavities of coelom. Open spaces या open cavities of coelom, and thus coelom is called as hemocoel. Hemocoel. The blood is colorless. The blood is colorless due to absence of any pigment. बेटे पिगमेंट का क्या फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. तो यहाँ पे तो पिगमेंट ही नहीं है, यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे होती है मैंने बताया था, जल्दी से बताओ. यहाँ पे ट्रेकियल रेस्पिरेशन है बेटा, है ना. आई हैव टोल्ड यू जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था. बाकी जैसे हमारे में है, हमारे में तो हीमोग्लोबिन है, ट्रेकिया आया, ब्रोंकाई में डेवलप किया, डिवाइड किया, ब्रोंक्यूल्स बने, ब्रोंक्यूल से आगे एल्वियोलाई बन गए, एल्वियोलाई से फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और ब्लड में हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इंसेक्ट्स में क्या है, ट्रेकिया, इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम कहते हैं ट्रेक्यूल्स. और ट्रेक्यूल्स सीधा जैसे हमारी ब्लड वेसल्स पहुंचती है ना, यहाँ पे ट्रेक्यूल्स सीधा सेल्स के पास पहुंच रही है. ठीक है, इसलिए ब्लड हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन. इट्स द ट्रेक्यूल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. इज इट ओके? तो मैंने बताया है ब्लड इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट. नेक्स्ट लाइन में लिखो दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज they mainly have tracheal respiration. Tracheal respiration ब्रैकेट में लिख लो in insects where trachea divides and redivides into, where trachea divides and redivides into many tracheoles. And each tracheole reaches up to each and every cell, and the tracheoles reaches
reaches up to every cell of the body and supplies oxygen. Thus, blood plays no role in transport of oxygen. Thus, blood plays no role in transport of oxygen. ठीक है, ये हमने बात की. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर. अदर respiratory organs are book gills in scorpions, and book lungs in spiders. उनमें एक अलग मैकेनिज्म है, हमें करने की जरूरत नहीं. book gills in scorpions and book lungs in spiders. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए एक्सक्रीशन. Terrestrial forms excrete uric acid. Terrestrial forms excrete uric acid. ठीक है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड्स और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. ग्रीन ग्लैंड्स उसी का ही नाम है बेटा, मालपीजियन, MALPIGHIAN, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम. लाइक annelids, they have double ventral nerve cord. They have double ventral nerve cord. Next है sensory organs. कंपाउंड आइज विद मोज़ेक विजन. मोज़ेक होता है बेटा, देखो अगर कॉकरोच हमें देखेगा ना तो उसकी जो कंपाउंड आई है छोटे 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 यूनिट्स की बनी है. एक यूनिट हमारा सिर देख रहा है, एक यूनिट हमारी गर्दन देख रहा है, एक यूनिट हमारी लेग्स देख रहा है, एक बाजू देख रहा है, ये. और फिर उसके बाद उसके सारे यूनिट्स उन इमेजेस को जोड़ेंगे, उन पार्ट्स को जोड़ेंगे. जैसे आप छोटे होते हुए बॉक्सेस नहीं जोड़ते, ब्लॉक्स जोड़ते थे, और ब्लॉक्स आप टेढ़े मेढ़े भी जोड़ देते थे, जरूरी तो नहीं कि सीधा ही बनाते थे. इसी तरह कॉकरोच को ये नहीं है कि जो है अक्षय ऐसे ही दिखेगा. हो सकता है अक्षय का चेहरा वो नीचे जोड़ ले, है ना, बाजुएं ऊपर और कुछ भी. ठीक है, वो मेरा मतलब उन्हें ये पता चल जाएगा अभी अक्षय आ रहा है, बट अक्षय का सिर कहाँ पे है ये नहीं उन्हें पता चलेगा. ठीक है, इतनी की है. तो दे फॉर्म मोज़ेक इमेज, मतलब इन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स. ठीक है, फिर वो जोड़ के बनाते हैं इमेज, और वो जुड़ा हुआ क्या बनता है ये उन्हें ही पता होगा, हमें तो नहीं पता चला. ठीक है जी. सो दे हैव कंपाउंड आइज विच फॉर्म मोज़ेक इमेज. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूनिसेक्सुअल या डायोशियस. एक ही बात है. यूनिसेक्सुअल और डायोशियस विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. हमें पता चलता है कि ये मेल है, ये फीमेल है. विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. फर्टिलाइजेशन इंटरनल,
They are mainly oviparous. Development may be direct or indirect. Next है first organisms to form endocrine glands. Endocrine glands which secrete hormones. Which secrete hormones such as growth hormone, juvenile hormone, etc. ग्रोथ हार्मोन, कॉमा करके जुवेनाइल हार्मोन, JUVENILE. ये कौन सा है? जुवेनाइल होता है बेटा जो लार्वा को लार्वा ही रहने देता है, बच्चा ही रहने देता है. जब इसने मेटामॉर्फोसिस करनी है, अनदर इज कॉमा करके एक और हार्मोन लिख लो, एक्डाइसन, ACDYSON, एक्डाइसन. इसको हम कहते हैं मोल्टिंग हार्मोन. इसका दूसरा नाम है मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग हार्मोन. जुवेनाइल है जो लार्वा को लार्वा रहने देता है. जब लार्वा ने अडल्ट बनना है तो एक्डाइसन सिक्रीट हुआ जिसने जुवेनाइल हार्मोन को इनहिबिट कर दिया. फिर क्या हुई? मेटामॉर्फोसिस हुई, मोल्टिंग हुई, मेटामॉर्फोसिस हुई, जुवेनाइल से अडल्ट बना. और फिर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, हम करेंगे आगे. नेक्स्ट आ जाते एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है. एपिस, APIS, एपिस, ब्रैकेट में लिख लो हनी बीज. सेकेंड है बॉम्बैक्स, BOMBYX, बॉम्बैक्स, BOMBYX, बॉम्बैक्स ब्रैकेट में लिख लो सिल्क मॉथ. और थर्ड है लेसिफर, LACCIFER. लेसिफर मीन्स लैक इंसेक्ट. उसके बाद है वेक्टर्स. ब्रैकेट में क्या था? लैक इंसेक्ट, लाख के कड़े नहीं बनते जिससे, LAC है ना. जयपुर में जाओ वहां पे लाख के कड़े बनते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वेक्टर्स ऑफ वेरियस डिजीजेस. फीमेल एनोफ्लीस फॉर मलेरियल पैरासाइट. नेक्स्ट है क्यूलेक्स मॉस्किटो for elephantiasis. Next है Aedes mosquito for dengue, chikungunya. AEDES, Aedes mosquito. नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट. पेस्ट है जो फसल को खराब करते हैं.
नेक्स्ट है ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस मीन्स जो झुंड में आते हैं। एग्जाम्पल है लोकस्ट। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल मतलब these are the living arthropod which has retained primitive characters. These are the living organisms. Living fossils means living organisms which have retained the primitive characters. एग्जाम्पल है लिम्यूलस, LIMULUS, लिम्यूलस। ब्रैकेट में लिख लो किंग क्रैब। किंग क्रैब। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारा रह गया था, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। The body is divided into head, thorax and abdomen, or cephalothorax and abdomen. ठीक है, तो बेटा इसमें जो है तो बहुत सारी क्लासेस है, बट हम बात यहाँ पे सिर्फ करेंगे क्लास इंसेक्टा। We will talk about only class इंसेक्टा या हेक्सापोडा। पोडा मतलब फीट, हेक्सा मतलब सिक्स फिटेड एनिमल्स। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen। हेड जो है formed of 7 fused segments। thorax में बेटा 3 segments है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे बेटा कंपाउंडाइज, वन पेयर ऑफ टेंटिकल्स, ये कंपाउंडाइज है। ये टेंटिकल्स है। फिर यहाँ पे इस तरह से करके माउथ पार्ट्स आ जाते हैं। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स है, ये देखो जरा, हर सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स है, सो 3 पेयर ऑफ लेग्स है।
ठीक है, जो बेटा 1 2 3 फर्स्ट सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोथोरैक्स, सेकंड को मीजोथोरैक्स और थर्ड को मेटाथोरैक्स। Each segment has one pair of legs. ठीक है, उसके बाद मीजो एंड मेटाथोरैक्स has one pair of wings per segment. ठीक है जी, ये इन जनरल एक इंसेक्ट का है। ठीक है, एब्डोमेन विदाउट अपेंडेजेस एक्सेप्ट one pair of anal cerci in both male and female. Abdomen without appendages except one pair of anal cerci in both male and female. In males, one pair of anal style styles are also present. In males, one pair of anal styles are also present. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। एक्सेप्शंस आ जाइए। लेपिस्मा, अपनी बायो की बुक खोल के देखना, वहां पे सिल्वर फिश, क्योंकि खोलते नहीं हो ना किताबें, तो जो किताबें नहीं खोलते उसमें देखना जाके, आपको सिल्वर फिश नजर आएगी। देखिए कभी, कोई सी किताब खोल लेना, ठीक है। सो लेपिस्मा, LEPISMA, लेपिस्मा सिल्वर फिश, it is wingless, it is wingless।
नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कॉकरोचेस। कॉकरोचेस में जो फोर विंग्स है, फोर विंग्स और मीजोथोरेसिक विंग्स, फोर विंग्स और मीजोथोरेसिक विंग्स are large leathery, are large and leathery. They do not help in flying, but act as wing covers. Of hind wings. Hind wings मतलब metathoracic wings. Act as wing covers of hind wings. ब्रैकेट में लिख लो metathoracic wings, which are meant for flying. Next है mosquitoes. Four wings functional, hind wings reduced to knob-like structures. Hind wings reduced to knob-like structures, which helps in balancing during flight. Thus called as balancers or halters. Thus called as balancers or halters. नेक्स्ट आ जाता है बेटा बेड बग, BEDBUG, बेड बग। बेड बग होता है बेटा खटमल, ठीक है। इट कैन नॉट फ्लाई, बेड बग जो है इट कैन नॉट फ्लाई। हिंड विंग्स एब्सेंट, हिंड विंग्स एब्सेंट है इसमें, एंड फोर विंग्स आर रिड्यूस्ड। हिंड विंग्स एब्सेंट है, फोर विंग्स आर रिड्यूस्ड। ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट एक और पॉइंट आ जाइए, हनी बी, हनी बी, एंड्स and termites are colonial insects. Honeybee, ants and termites are colonial insects which live in colonies. ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट योर फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम करते ये पढ़ के आओ अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइम हम नॉन कॉर्डेट सैटरडे को मोलस्का रह गया, काइनोडर्मेटा रह गया, हेमिकॉर्डेटा छोटा सा है, हम ये कर देंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पर सैटरडे हम संडे क्लास ले लेंगे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, क्योंकि फिर अगले हफ्ते कोई ना कोई छुट्टी आ रही है, तो फिर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की हम संडे को क्लास ले लेंगे। उससे अगले संडे तो टेस्ट है ही है आपका, ठीक है ना। तो ये हम कर लेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल हैव योर वी विल कंप्लीट योर नॉन कॉर्डेट्स, ये पढ़ के, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।
थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा।